Hello friends. Today we are at the Parsi Fire Gardens in Dadar. We have come here with a purpose of meeting Mr. Ghanshyam Mukhe. When we used to cycle around in this area, we had seen him. But we were lucky enough to be introduced to him through a common friend of ours. Mr. Ghanshyam Mukhe is a complete athlete. He has completed Ironman. Plus, he has taken part in more than 300 marathons, both half marathons, full marathons. He has also taken part in swimming competition, and he is also involved in rifle shooting. What struck us when we met him is his humility and simplicity. So, without wasting more time, let us get Ghanshyam Mukhe into our frame. Okay, so now we have Mr. Ghanshyam Mukhe with us. Mr. Mukhe, thank you very much for giving us your time. Okay, sir. Thank you. Good morning. Good morning. The first thing that I would like to ask you is, if you could tell our viewers, what exactly is Ironman? Okay, Ironman is called like a triathlon, and the triathlon, it's 3 activities are going there. The first activity is called swimming. Second activity is for the bike. Cycling. We call cycling, and then third activity is the running. Okay. So that's 3 activities one by one continuous we have to do, and that's completely once you will finish, then it's called Ironman. Okay. So that's triathlon series. It's the worldwide. That's called World Championship. Okay. That game is called World Championship. Okay. Okay. Yeah. The Ironman is like maybe earlier it was done in out of countries. Okay. Nowadays it started in India also. The first time India has done 2019. October 20 October. 2019. Okay. Yes, 20 October 2019. 2019. Okay. And if you want or anybody wants to check out in the website, so they will get, like for example, if I have done the Ironman. Yeah. So whenever you will go in the website, Ironman website, and you will check it the name, so it will shows. So that is the worldwide, you will get the information. Okay. Yeah. And once you complete your swimming, then you have to, after 2 minutes, 3 minutes, you have to just get timing for the change of dress. Okay. Then you have to immediately take it your bike. Okay. After bike complete, you have to do your running. Okay. So there are 2 categories. One is the half Ironman, one is the full Ironman. Okay. So half Ironman, the timeline is 8 hours 30 minutes, Okay. and the full Ironman is 17 hours. Okay. So that activity is again there is the time clause, the swimming timeline. Okay. Swimming timeline, you have to cut off time is there. Okay. So you have to come in cut off time. Okay. Otherwise disqualified. Disqualified. So that is again the part in the bike also. Okay. The same. Okay. So first the full Ironman is the 4 kilometers swimming. 4 kilometers of swimming. Okay. Yeah, open water. Okay. Then after that you have to do your 180 kilometers bike Cycling. cycling. 180. Okay. 180 kilometers. Okay. Then you have to do 42 kilometer run. Oh, that's like a full marathon. Full marathon. Okay. Yeah. And then same it is half. You have to do for the half Ironman Okay. activities. So the Okay. 2 kilometers like swimming. Right. Then 90 kilometer bike. Right. And then 21 kilometer running. Okay. So these are the 2 categories. Oh my so God. World Championship, yes. So Wow. most of the people is love that to do like the athletic, because nowadays what happened, there is the runners. We were going to inspire to each other. Right. Like for my friends, they are each other motivating to someone else, like maybe marathon goes, and that is the implement power goes to the every athletic to improvement their challenges. Okay. कि मैंने अभी 5 किलोमीटर का रन लिया है, now I have to do 10, Okay. then 21, then we increase to like maybe 42 करो. Okay. So that is the most important thing in the friendship, the group, Okay. the benefit of the group. Right. Right. To right. run alone, it's a different. Yes. If you will run with the group, that is different. Definitely. So once you will be growth, your immunity power as well as your achievements, as well as your goals. Okay. So the same will be followed to each other, all friends. Right. Right. So then one time what will be happen, your group will be the champions. Oh yes. Yeah. So that is the benefit to make together, and all groups Correct. run together. So that's benefit. Yeah. But
what was the reason? What attracted you to Ironman? Like you said that Ironman started in India in 2019. Yeah. What attracted you to Ironman? So attracted it like maybe the most of the runners their capacity is more than their they knows and the hidden capacity are behind over there. But लोगों के बीच में क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि मेरे में कैपेसिटी क्या है, क्या काबिलियत है. जब वो 5 किलोमीटर का 10 में जब मैराथन में जाता है तभी बोलता है, खुश हो जाता है, बोलता है यार मैंने 10 किया, भरोसा नहीं था. 10 वाला बोलता है मैंने 21 किया यार, मुझे पहली बार इनके वजह से किया. लाइक एक फ्रेंड होता है. देन 42 का सेम है. तो वैसे ही ये एक अचीवमेंट है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं फिर उसको गाइडेंस करते हैं, यार आप अच्छा एथलेटिक हो, नाउ यू हैव टू डू ट्रायथलॉन, डुआथलॉन. फिर वो डुआथलॉन क्या होता है पूछता है, ही नो कि भी क्या है. सो द गेम इज लाइक मे बी डुआथलॉन, रनिंग एंड साइकिलिंग. सो रनिंग एंड साइकिलिंग का जो डुआथलॉन होता है तभी वो बोलता है अरे यार मैंने डुआथलॉन किया. फिर कोई और उसको मिलता है, बोलता है ट्रायथलॉन करो. सो ट्रायथलॉन करने के लिए फिर एक्टिविटीज बोलता है क्या क्या है, तो उसमें फिर स्विमिंग रहता है. तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिसमें किसी को स्विमिंग नहीं आती, फिर देन ही हैज डू टू प्रैक्टिस एंड ही विल गेट द वंस ट्रायथलॉन सीरीज के लिए रेडी हो जाता है. रेडी होने के बाद में एक ऐसा मौसम आ जाता है उसमें कि चलो यार ये जुनून अपने में है तो दूसरा भी कर रहा है. तो ये आयरन मैन जो है, ट्रायथलॉन जो है, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो आउट ऑफ कंट्रीज में चलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा लोगों के मन में आता है. वैसा मेरा भी सेम वैसे ही है. द मोटिवेशन इज़ लाइक मे बी आई एम फ्रॉम द स्कूल टाइम से मैं थोड़ा खेल कूद में हूँ. फिर आई हैव टेकन लाइक मे बी एक मोटिवेशन ईच अदर्स. तो उससे क्या हो गया कि अच्छा एक मतलब एथलेटिक बन गए. नाउ यूट्यूब कैन रन, जैसे मिस्टर वेंकट रामन है, फिर डॉक्टर पाटिल है जो ऑर्थो के स्पोर्ट्स में है. तो इन्होंने सब क्या किया, एक मतलब एक दूसरे को है ना एक भरोसा दे दिया कि बाबा आप अच्छे रनर्स हो, अच्छे एथलेटिक हो, सो आप थोड़ा सा और भी ध्यान दिया करो. एंड देन दे गिव द गाइडेंस लाइक भी ऐसे स्टेप्स होना चाहिए, वैसे स्टेप्स होना चाहिए, लैंडिंग, टेक ऑफ, प्रैक्टिस ऐसी होना चाहिए. तो उससे करते करते फिर हम लोग आगे बढ़े. देन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 5 किलोमीटर्स. Okay. पहला रन. Oh. देन 10 किलोमीटर, 21, देन 42, देन अल्ट्रा, Okay. देन 100 किलोमीटर्स, Right. देन 12 आवर्स रन, 24 आवर्स रन. Oh my तो God. उसके बाद में फिर हम लोगों ने चलो ओलंपिक शुरू किया. ओलंपिक में एक होता है कि जो हाफ आयरन मैन जो है उससे भी आधा सेम. Okay. So that's called Olympic series. Okay. First swimming, 1.5 kilometer open water again, and then 40 kilometer cycling bike, and then 10 kilometer का run. Okay. So वो Olympic series आपने एक कर लिया, उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है. उसके बाद में आप you are the qualified for half Ironman. Okay. And then half Ironman से आप full Ironman. Okay. Like so अभी now in India started Tigerman also. Okay. So Tigerman series also the same. देर आर 3 किलोमीटर टाइगर मैन में 3 किलोमीटर्स का स्विमिंग है ओपन वाटर, 120 किलोमीटर का बाइक है, 120, देन 25 किलोमीटर का रन. सो दैट आल्सो आई हैव डन इन नागपुर. Okay. Okay. देर इज़ द अंबाझरी लैक इन द नागपुर. बहुत अच्छा ओपन वाटर है. तो मैंने वहाँ पे टाइगर मैन किया है. Okay. सो वहाँ पे भी डॉक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजर. सो इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द एथलेटिक बेस्ट चैम्पियनशिप. सो उस हिसाब से हमने नाउ आई हैव डन 5 ओलंपिक सीरीज, 1 आयरन मैन, 1 टाइगर मैन. Okay. एंड देन टफ मैन ऑल्सो आई हैव डन इन लद्दाख. Okay. सो टफ मैन अगेन इज़ द अदर थिंग्स लाइक 63 किलोमीटर का उस पर बाइक होता है साइकिलिंग, देन 10 किलोमीटर का रन. सो देर आर ऑल्सो द कट ऑफ टाइमिंग. Okay. सो कट ऑफ टाइम के अंदर आया तो इन देन यू विल डू द बाइक, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई. सो दैट इज़ द अचीवमेंट्स. We get inspired to each other and we make our target and our goal. Okay. So that is achievements we call.